The Sanskrit iceberg explained, and I have no clue what that means. I guess the more you chip away at it, the more you find. I don't know, but this has been recommended to me for quite a while. I always try to take a while before watching something else that has to do with language, because then I'm just, my brain just doesn't function afterwards, especially when it comes to more language. अहो मित्राणि कथं भवन्ति सर्वे अस्माकं यूट्यूब चैनल इंडियन पिक्सेल्से भवतः स्वागतमस्ति। अद्य वयं संस्कृतस्य रोचकत्वानि तथ्यानि अन्वेष्टुम् आरब्धुम्। भवतः सच्चा किम् आगमः याम्। That Nightcore song might actually just get me restricted. I was like, oh, this is I Wanna Die Young. I think that's the title for the song. In Nightcore version, I'm like, yeah, this is going to get me restricted. तो दोस्तों, जैसा कि आपने फिगर आउट कर ही लिया होगा, आज हम बस एक भाषा के बारे में बात नहीं करने वाले, हम एक सभ्यता की फाउंडेशन के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ देव भाषा संस्कृत के बारे में। बट चिंता मत करो, ये वीडियो कोई बोरिंग एनपीटीएल का वीडियो लेक्चर नहीं होने वाला। हम संस्कृत का अध्ययन करने वाले हैं विद अ फन न्यू ट्विस्ट इन एन आइसबर्ग फॉर्मेट, जिसे फन फैक्ट संस्कृत में कहा जाता है हिमस्तंभ। हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द टॉप, फैक्ट्स जो कि पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, वो फैक्ट्स जो मोस्टली सबको पता होता है, और फिर धीरे धीरे करके हम जाएंगे डीप अंदर ऑफ द समंदर, जहाँ पे हमें मिलेंगे कुछ रहस्यमयी फैक्ट्स जो कि होपफुली आपका दिमाग हिला के रख देंगे। सो चलिए विदाउट मच अडू एंटरटेनमेंट शुरू किया जाए। पहला फैक्ट है कि संस्कृत इज रेयर बट इट इज एवरीवेयर। 2011 के सेंसस के मुताबिक इंडिया में बस 25,000 से कम लोग हैं जिनकी मातृभाषा संस्कृत है। ये नंबर्स इतने कम होने के बावजूद संस्कृत का छाप सब तरफ है। फॉर एग्जांपल, संस्कृत हम पाते हैं हमारे करेंसी नोट्स में, हमारे नेशनल एम्बलम में, हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स के लोगोज में। इनफैक्ट हमारा नेशनल एंथम भी संस्कृताइज्ड वैरायटी ऑफ बंगाली है, और हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वो तो पूरा संस्कृत में। इंडिया में जब हम एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, वी से नमस्ते। दिस वर्ड आल्सो इज अ संस्कृत वर्ड, देयरफॉर संस्कृत इंडिया के ब्लड स्ट्रीम में बसा हुआ है। चलिए over to the next fact. Guys, दूसरा काफी commonly known fact ये है कि संस्कृत is the mother of many languages. भारत के top 120 I was like, all languages. I'm like, wait a minute, that seems a little off. That's not accurate. I mean, sure, a lot of people like to take joy in the fact that their language is ancient, but the mother of all languages, especially when so many people are from so many different locations, it's just like, no. It's not the first, but it is old. It is ancient. मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस की लिस्ट में 78 की ओरिजिन संस्कृत से ही है। कई सारी भाषाएं जैसे कि बंगाली, मराठी, ओडिया, पंजाबी, अवधी, गुजराती, असमीज, इन सब का बर्थ संस्कृत से हुआ था। दूसरे लैंग्वेजेस लाइक तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम संस्कृत से डायरेक्टली इमर्ज तो नहीं हुए, बट संस्कृत का इन पे एक डीप इम्पैक्ट रहा है। इनफैक्ट क्या तुम्हें पता है कि इंडोनेशिया के एक आइलैंड जावा में बोले जाने वाली जावानीज लैंग्वेज में भी संस्कृत का हमें इन्फ्लुएंस दिखता है। इंडोनेशिया का नेशनल एम्बलम है द गरुड़ पंचशील, जिसके नीचे लिखा होता है इंडोनेशिया का मोटो भिन्नेका तुंगलिका, जिसका मतलब है कि भिन्नता में ही एकता है। प्रीटी सिमिलर टू संस्कृत, नहीं? तीसरा फैक्ट, संस्कृत एक क्लासिकल लैंग्वेज है which belongs to the Indo-Europe. Well, I gotta say, when it comes to like people using language, like ancient language as a mantra, I mean, what is it? Like, I think like fraternities and sororities, they use ancient language to kind of explain the beta or whatever. I think fraternity and sorority are even words from wherever they're from. But that always happens. Like, they'll use old Latin words that aren't even used anymore as a way to show that they're ancient, when that's not really the case. But yeah, a lot of people will just take something like, oh, that looks old. Oh, it is old. Let's utilize it. There's nothing wrong with that, but sometimes people just do that just to look more historic than they really are. लैंग्वेज फैमिली संस्कृत को लैटिन, ग्रीक, हिब्रू, पर्शियन और मैंड्रिन की तरह एक क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा हासिल है, यानी कि एक बहुत पुरानी भाषा है जिसका एक बहुत बड़ा लिटरेचर भंडार है। मजे की बात लेकिन ये है कि संस्कृत इंडिया की दूसरी क्लासिकल लैंग्वेज है। पहली थी एनी केसेस तमिल। संस्कृत ऑल्सो बिलोंग्स टू द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली, एक बहुत बड़ी डाइवर्स फैमिली जिसमें हिंदी भी इंक्लूडेड है और इंग्लिश भी, ओडिया भी और पोर्तुगीज भी। मतलब कि इटालियन और भोजपुरी चचेरे ममेरे भाई बहन टाइप के ही हैं। इनफैक्ट क्या तुम्हें पता है कि द होल फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स का इमर्जेंस हुआ था जब कुछ अंग्रेजों ने नोटिस किया कि भाई उनकी यूरोपियन लैंग्वेजेस और संस्कृत में कितने सारे पैरेलल्स हैं। और आपको शायद ये भी नहीं पता होगा कि अंग्रेजी के ज्यादातर शब्द संस्कृत से लिए गए हैं। संस्कृत का शब्द मात्र अंग्रेजी में मदर बना, भ्रातृ बना ब्रदर, ज्यामिति बनी ज्योमेट्री और त्रिकोणमिति बनी ट्रिग्नोमेट्री। देखिए कैसे लिथुआनियन और संस्कृत में भी बहुत सारे पैरेलल्स एग्जिस्ट करते हैं। Sanskrit and Lithuanian. sunus, Viras. virkas, Vilkas. tava, Tavo. pada, Pėda. agni. Ugnis.
Finally, the last fact. I gotta say, one thing I know the English language is completely butchered because there are so many words that don't even have an English word to it. They just took the local context from wherever the word came from and utilized that. So there is no, I think French is like the only one, like they don't say blue jeans. They literally needed to invent their own word for the term blue jeans in order to not degrade their language. So French always tries to create a word in their tongue for something instead of just taking that something's word, which English tends to always do. It's just like, oh, you're saying that? Sure, the word might be butchered, but they take the word no matter what because it's just easier to. It's much easier to. Of our first hire. संस्कृत दुनिया की वन ऑफ द रेयरेस्ट लैंग्वेजेस है जिसमें डुअल केस होता है, यानी कि द्विवचन। इंग्लिश और हिंदी में जैसे इनको बोलेंगे वन हॉर्स, टू हॉर्सेस, मेनी हॉर्सेस। हिंदी में एक घोड़ा, दो घोड़े, अनेक घोड़े। नोटिस दैट डुअल एंड प्लूरल आर ट्रीटेड द सेम वे, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता। संस्कृत में इट इज एकः अश्वः, द्वौ अश्वौ एंड बहवः अश्वः। नोटिस हाउ टू एंड प्लूरल आर ट्रीटेड डिफरेंटली। फन फैक्ट, दुनिया के बहुत सारे लैंग्वेजेस में ऐसा डुअल केस होता था, बट समय के साथ ये विलुप्त हो गया। फॉर एग्जाम्पल, एंशिएंट ग्रीक में एक सिंगुलर पर्सन को बोलते हैं एंथ्रोपोस, दो व्यक्तियों को एंथ्रोपो और अनेक व्यक्तियों को एंथ्रोपी। सिमिलरली स्लोवेनियन में एक घर इज एनाहिशा, दो घर आर द्वेहिशी और तीन घर इज त्रिहिशे। क्रेजी बात तो यह है कि इंग्लिश में भी एक टाइम पे डुअल केस मौजूद था। फॉर एग्जांपल, फॉर टू ऑफ अस यू वुड से विट एंड फॉर मेनी ऑफ अस यू वुड से वी। देयरफॉर संस्कृत इज वन ऑफ द फ्यूएस्ट लैंग्वेजेस जिसमें ये डिफरेंस अभी तक बरकरार है। तो दोस्तों, दैट वाज ऑल वेरी कॉमन बेसिक नॉलेज। अब चलते हैं हमारे आइसबर्ग के दूसरे लेवल पर, पानी के जस्ट नीचे गीले। Yeah, the more in-depth stuff that nobody knows about. They're either to review 100K. Oh, that's great. That's great. I want to do a spoiler one because I haven't talked enough about it. I want to actually talk about some things that stood out to me. But yeah, I mean, language is always fascinating. It's always too much for me. For me, I have a better ear for language than I have an actual tongue for it. Like I can pick it up, hear it, and understand what's being spoken to me, like if I'm given enough time. But speaking it is something completely different. To actually move, to pronounce like the syllables, the vowels, moving my tongue whatever way needs to be done, or speaking from the back of the throat if it's like Arabic. It's just so many different things that go into it. Hearing it is something different. करते हैं अपने पैर with some more advanced Sanskrit facts. This is the Sanskrit लेकिन उससे Iceberg. पहले some important announcement. India and Pixels is back with another brand new course, Introduction to Data Storytelling. 2 साल पहले हमने लॉन्च किया था Introduction to Data Visualization का live cohort, and I'm happy to share a new advanced improved version of the course is back here again. First of all, I think you're an excellent teacher, and you should, no matter what you do in life, you should always be a teacher. You are brilliant. 255. Yeah. It's becoming more like Germany's flag, isn't it? Yeah. This is exactly what data visualization is. इस कोर्स में आप सीखेंगे कि डेटा के साथ हम काम कैसे करते हैं और उसे एक कहानी के रूप में कैसे प्रेजेंट करते हैं। चाहे आप जर्नलिज्म में हो या बिजनेस में, सेल्स में या मार्केटिंग में, टेक में या डिजाइन में, ये कोर्स हर फील्ड के लिए यूजफुल है। एंड सबसे अच्छी बात, इसमें कोडिंग की कोई जरूरत नहीं है आपको। प्री रजिस्ट्रेशन अभी लाइव है और हाँ, स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है। फॉर मोर डिटेल्स चेक आउट द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अब वापस आते हैं हमारे Learning, like I learned a bit of coding for fun. Yeah, it was weird. It was just like, it was a mix between, I've always seen it as a mix between math and language. I for some reason, that's how I've always seen it, and it just makes sense to me that way. It's how you basically speak to a machine so it can understand you and do as you command. So it's a mix between math and language. It is a language of itself, but it is math as well. Yeah, but that's not what this is about. But he's talking about coding, and I'm like, oh yeah, I did that for a short period of time. संस्कृत आइसबर्ग की तरफ। तैयार हो लेवल 2 के लिए? चलो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 5, द फोर वेदास। 1500 BC से 500 BC के बीच का समय को कहते हैं वैदिक काल। इसी टाइम पे वेदों की रचना हुई थी। पर वेद एग्जैक्टली हैं क्या? वेद शब्द का मतलब होता है ज्ञान या विजडम। ये आता है फ्रॉम द रूट विद, जहां से हमें मिलता है विद्या। जनरली सबको पता होता है कि वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद काफी सारे की वैदिक गॉड्स के प्रेजेस के ऊपर है। यजुर्वेद रिचुअल्स और सेरेमनीज पे फोकस करती है। सामवेद ऋग्वेद की मंत्रस को म्यूजिकल फॉर्म में प्रेजेंट करती है और अथर्ववेद मेडिसिन, रेगुलर सेरेमनीज एंड कुछ मिस्टीरियस पावर्स को डिस्क्राइब करती है, लाइक कॉन्करिंग योर एनिमीज और प्रोटेक्टिंग योर फ्रेंड्स फ्रॉम अ स्नेक अटैक। चलो ये तो सबको पता होता है, बट व्हाट इज लेसर नोन इज दैट हर वेद के 4 कंपोनेंट्स होते हैं।
Samhita, meaning the actual text with the mantras and the hymns, Brahmanas, which have the rituals and ceremonies के explanations, Aranyaks, जो कि forest treaties होते हैं, focusing on meditation and philosophy, and finally the Upanishads, the large components of the Aranyaks, which have pure, deep philosophical discussions about the ultimate reality. Interestingly, कुछ हिंदू मानते हैं कि वेद eternal हैं और authorless हैं, मतलब ये knowledge हमेशा से exist करती है। एक और explanation है कि जब ऋषि मुनि अपने deep ध्यान state में universe को face करते थे, तब उन्हें जो revelations प्राप्त हुई वही वेद है। Well, I mean, that does make sense because for some reason, even now, they're discovering things and concepts and ideas that have been known like for ages. Certain ideas about reality, certain ideas about space and time and the galaxy of it constantly fading away. Like how it's like people had those thoughts eons ago and wrote it down, but those were just the crazed, deranged lunacies of a deranged man. And now it's like, oh well, we've used our telescopes, we've used our technology, and now we see that this stuff is actually accurate. There is a lot of truths to it, but a lot of people always go into it like when something tries to be. They like even when back in the day when people were talking about like the future will have automotive travel where you don't need an actual horse to pull you, things like that, because they would see like the invention of a train and it was like that's the future, and everyone would call them deranged because the future does what it does on its own instead of like being able to drive. No, you always need something to pull it, but then technology advances and it's like, oh, that person proves to be right way past his lifetime. But yeah, it's just like that. That's always been the case. People can see the future. People have always been able to have like an inkling of how the universe is. Do all of us have it? Absolutely not. But there have been people who can just, for lack of a better word, feel it, I guess. हर वेद का ना अपना एक एक्सपर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल होत्रीज बेस्ड ऑन द ऋग वेद का काम होता है गॉड्स को प्रेज करना ताकि वो यज्ञस में इनवाइटेड फील करें। अध्वर्यु बेस्ड ऑन द यजुर्वेद हु आर लाइक द होत्रीज असिस्टेंट्स जो कि यज्ञ के सारे रूल्स एंड कस्टम्स में माहिर होते हैं। फिर उद्गता बेस्ड ऑन द सामवेद जो कि सॉन्ग्स और मेलोडी से यज्ञ का एक वाइब क्रिएट करते हैं। एंड फाइनली द ब्राह्मण्स बेस्ड ऑन द अथर्ववेद जो कि पूरे just like the Korean, the different cities, village, the different, yeah, well, just like in America, the dialect changes drastically, whether you're in like southern Georgia to New York to even the Bronx to California to Detroit, all over the place. You go up to Canada, all around Canada, there's different completely connotations on how they say things. It completely changes. यज्ञ के संचालक से होता है। ये डिवीजन ऑफ प्रीस्टली फंक्शंस हमें यूरोप के सेल्टिक कल्चर में भी दिखता है, जहाँ पे druids are like the high priests, like the hotris and the advaryus. The bards do the chanting, like the udgatas, and the Veds perform the actual sacrifice, like the Brahmins. Fact number 6: Vedic versus classical Sanskrit. अगर आपने स्कूल में संस्कृत सीखा है तो आपको पता होगा कि संस्कृत काफी लॉजिकल लैंग्वेज है। हर नाउन के जेंडर और एंडिंग के बेसिस पे उस वर्ड का एक शब्द रूप होता है और हर वर्ब के टेंस के मुताबिक उसका धातु रूप होता है। तो एक शब्द को देखकर आप उसका सब्जेक्ट, एक्शन, टेंस, केस ये सब जान सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर द संस्कृत वर्ड अगमिष्यताम। इसको हिंदी में हम कहते हैं वो दोनों गए होते। इस एक शब्द से हमें पता चल जाता है कि इसका रूट है गम यानी जाना, इसका लकार या टेंस है रिंग लकार मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और इसका केस है डुअल। एंड सो इतना सारा इन्फॉर्मेशन एक ही वर्ड में पैक हो सकता था। एंड बिकॉज ऑफ दिस एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेशन कुछ लोग संस्कृत को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह मानते हैं। बट हियर इज द ट्विस्ट, इस वैरायटी ऑफ संस्कृत को हम कहते हैं क्लासिकल संस्कृत, वही वर्जन जो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था और वही वर्जन जिसमें वंदे मातरम लिखा गया है। ऋग्वेद की जो भाषा थी दैट वाज कॉल्ड वैदिक संस्कृत, एंड वो क्लासिकल संस्कृत से थोड़ी अलग थी। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कीजिए ऋग्वेद के 10वें मंडल के 10वें सूक्त के 10वें मंत्र को। इसको वैदिक तरीके से ऐसे पढ़ा जाएगा, आघात गच्छानुत्तरा युगानि यत्र जामयः कृणवन्न जामि। और क्लासिकल संस्कृत में तानि उत्तराणि युगानि आगच्छन्ति यत्र जामयः जामि कुर्वन्ति। नोटिस कीजिए कैसे क्लासिकल वर्जन थोड़ा फेमिलियर साउंड करता है विद वर्ड्स लाइक कुर्वन्ति या आगच्छन्ति। और हाँ, क्लासिकल संस्कृत में पिच सिस्टम भी नहीं होता। वैदिक भाषा एक नेचुरल भाषा थी और हर नेचुरल भाषा की तरह इसमें काफी सारे इरेगुलरिटीज भी थे। 600 BC तक हाउएवर वैदिक संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंशज में कन्वर्ट हो चुका था, जैसे कि मगधी, शौरसेनी, गांधारी। एक एग्जांपल सुनते हैं। सच्चम जाणैदट्ठुं सरसम्मिजणं मिजुज्जैराओ मरौणतुमं भणिस्सं मरणं विसलाहणिज्जं से
विश्ववर्मसस्त्रेतगस्पुत्रे इंद्रवर्म कुमरे हिमे शरीर परिठवेति। सो तब के गांधार और आज के अफगानिस्तान में बसे ऋषि पाणिनि ने सोचा कि ऐसा चलता रहा तो संस्कृत तो पूरा विलुप्त ही हो जाएगा। दैट इज व्हेन ही डिसाइडेड कि संस्कृत के रूल्स को उन्हें कोडिफाई करना चाहिए, एक फॉर्मल तरीके से स्टैंडर्डाइजेशन करना चाहिए, एंड दैट इज हाउ क्लासिकल संस्कृत वाज बॉर्न। एक तरीके से ये एक रिकंस्ट्रक्टेड भाषा थी। लेट्स लुक एट सम डिफरेंसेस बिटवीन वैदिक एंड क्लासिकल। वैदिक संस्कृत में रेट्रोफ्लेक्स साउंड्स बहुत कम थे। साउंड्स लाइक ट ठ ड ढ ण। माना जाता है कि ये साउंड्स द्रविडियन भाषाओं से संस्कृत में आए। सो क्लासिकल संस्कृत में ये काफी ज्यादा यूज होते हैं। जैसे कि आपने देखा था वैदिक एक टोनल लैंग्वेज है, उसमें पिच होते हैं। See, it's funny, like almost what I've been saying. It's like if something isn't set down as concrete, it fades in time. I mean, even it happened with the Sanskrit, where it started to diverge in different areas as completely different kind of connotations and dialects. Even though they would be able to speak to each other, it completely divulged into something completely different than it originally was. Like, that's why I say it'd be great, like with India having its massive conflict over language, set a national language and protect the others, because the longer it goes without a national language, the smaller the world becomes, the quicker the language will divulge into completely different thing, something it never was originally. Like that's a perfect case for what I was talking about, because always the main language of a nation is the one that will evolve with time. Like, I would not be able to speak to someone from 19th century America. Well, I would, but we would just sound like we're talking to complete aliens who don't actually truly understand the tongue, the common tongue. We just speak it in our basic knowledge. That's literally what it would become. But if you lock down a language and protect it and prevent it from shifting away, because no matter what, it's the younger generation that gets to dictate the future of a language. That's why in like common speech now, no matter where you are in the world, they all use text acronyms to make talk even shorter. Instead of be right back, it's BRB, which literally is exactly the same, but they still use that. Or people will just say LOL for something that's just like, something that's funny, but it's not actually laugh worthy. But yeah, you always need to protect the language. This is like a perfect reason as to why there should be a national language. It's funny because while I'm in India, it's like Hindi seems to be the national language, but everyone like refuses to accept it. So Hindi's everywhere, but then everyone seems to have issues with that. But it's like whatever. Eventually they'll realize that they're all the languages will erode away to where they realize they made a mistake in not getting a language, because the past is a prime example as to why you want to protect languages. अनुदात्त, स्वरित। जबकि क्लासिकल में ये सब नहीं थे। तीसरा, ये थोड़ा टेक्निकल है। वैदिक संस्कृत का विसर्ग दो ऐसे साउंड्स बना सकता था जो क्लासिकल संस्कृत में मौजूद नहीं है। एक को कहते हैं जिह्वा मूल्य और दूसरे को कहते हैं उपदमन्या। These make the sound ख and फ, sounds जो normally people think are Urdu or Persian based. Levi, the language war is being made now. Was not President British came and left. The Odai versus Bengali started over British recognize Bengali as a language, but not direct Bengali as a lie. Same happened to many places. Kuki and Naga in Eastern is also saying, well, yeah, that tends to happen. But the thing is, India should realize that it needs a national language as a whole instead of it being eroded away. I mean, who knows? Maybe they will all be protected in some way or another. But if everyone still continues having an issue with language instead of having a regional language and a national language, it just makes it easier for that. Because me, I go to India. I want to learn Hindi because my wife's family, but I'm not going to learn Kashmiri. I'm not going to learn Punjabi. I'm not going to learn like all these other that the family also speaks, because it's just too much for me. But what's funny is if I was traveling to India without my if I didn't know my wife or anything, I'd go there with English only. Because what's the reason to learn a language when everyone there already speaks something different, and that there's no point in learning each regional dialect. But it seems respectful to learn like at least a bit. Like if I'm going to Japan, I'll learn like the basic of like the Japanese tongue just for like getting around. It just seems like respectable.
जिह्वा मूल्य या फिर द ख साउंड तब आता है जब विसर्ग क के सामने हो, और उपदमन्य यानी द फ साउंड वो तब आता है जब विसर्ग प के सामने हो. When a visarga is followed by a pa or pa, it's pronounced as an F sound. For example, Dhiyo yo naf prachodayata. When a visarga is followed by a ka or ka, it's pronounced as a guttural sound. For example, Brahmana koshosi. एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वैदिक में एक ऐसा साउंड था, एक ऐसा वावल जो क्लासिकल में मेंशन तो है बट कभी यूज नहीं होता, एंड दैट वावल इज र. कंफ्यूज्ड? लिसन अगेन. र. इस साउंड को कुछ ऐसा लिखा जाता है, एंड इसे बनाने के लिए आपको आपके टंग को आपके दांतों से जस्ट थोड़ा पीछे रखना. That's why I can't do ये it. पूरे संस्कृत के बस एक वर्ब में आता है, कल्प. फॉर एग्जाम्पल, लिसन टू दिस चैंट फ्रॉम द यजुर्वेद. सुगंच मे सुपथंच मरुद्धंच मरुद्धिश्च मे क्लृप्तंच मे क्लृप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे. Yep, that's the sound. बट फन बात ये है कि ये वावल जो है ना वो ईस्टर्न यूरोप के कुछ भाषाओं में भी एग्जिस्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल इन स्लोवाकियन, बाय द वे, व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम स्लोवेनियन जो हम लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, देयर इज द साउंड कॉल्ड कल्प, व्हिच साउंड्स वेरी मच सिमिलर टू द संस्कृत वर्ब. Kolb. Kolb. Bolí má kolb. Žbon knutě. एंड लास्टली, क्लासिकल संस्कृत में बहुत सारे लोन वर्ड्स द्रविडियन से आए हैं. A lot of people believe the word puja, for example, formed from the Dravidian words pu plus che, मतलब to do the flower or to offer the flower. क्योंकि वैदिक संस्कृत एक एलीट लैंग्वेज थी और बस कुछ लोगों को अलाउ किया जाता था वैदिक संस्कृत सीखने के लिए, शायद अगर पाणिनि जी ने संस्कृत को ओपन सोर्स नहीं किया होता तो मे बी हम आज संस्कृत नहीं बोल पाते. फैक्ट नंबर 7, क्लासिकल वर्सेस मॉडर्न संस्कृत. पिछले फैक्ट में हमने देखा था वैदिक और क्लासिकल संस्कृत का सफर, लेकिन क्या आप जानते हैं कि संस्कृत का सफर अभी भी जारी है. आज की संस्कृत जो यंग लोग बोल रहे हैं वो संस्कृत का एक नया अवतार है. एक्सपर्ट्स इसे मॉडर्न संस्कृत कहने लगे हैं. मॉडर्न संस्कृत क्लासिकल संस्कृत से कुछ अलग है, जैसे क्लासिकल वैदिक से कुछ अलग थी. क्लासिकल में भी फिर इसको हम आधुनिक संस्कृत कहते हैं. You need to look at India as a union of states rather with different cultures and languages rather than a single monoculture. Exactly. But the problem is the younger generation doesn't want to adhere to all that. That's why the languages need to be protected. They need to be, because eventually people will find it annoying having to completely learn a different tongue for their neighbors. That what they'll do? They'll just start integrating the neighbor's tongue into their own language, and then you have a hodgepodge of languages all utilizing the just so they could get along with each other and actually be able to speak to each other. I mean, that's what happened to English. I mean, there's so many different tongues and words that are utilized just because it's easier than having to create an entire new word, even though the pronunciation does change when it comes to English because a lot of people can't do the same sounds. We just can't. पहले तो हम लोग कहते थे कि संस्कृत कैन बी डिवाइडेड इनटू 2, वैदिक संस्कृत और क्लासिकल संस्कृत. आजकल तो हम कहते हैं वैदिक संस्कृत, क्लासिकल संस्कृत एंड मॉडर्न संस्कृत. एक तरीके से दिस इज संस्कृत 3.0 विद अ फन यूजर फ्रेंडली अपडेट. क्या बदला है? चलिए देखते हैं. पहला, लकारों का सिंप्लीफाइड वर्जन. क्लासिकल संस्कृत में 10 लकार थे, यानी कि 10 टेंसेस थे. देयर इज अ फॉर्म टू ब्लेस समवन, देयर इज अ फॉर्म टू से समवन मस्ट डू, बट मॉडर्न में जनरली पीपल यूज जस्ट 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. सेकंड, इंग्लिश के शब्द. अब संस्कृत में काफी सारे शब्दों के लिए संस्कृत वर्ड्स हैं. फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर को संगणक कहते हैं, बट मॉडर्न संस्कृत में दिस इज काइंड ऑफ एक्सेप्टेड टू यूज इंग्लिश लोन वर्ड्स. दिलचस्प बात यह है देखना कि लोग मॉडर्न संस्कृत से कर Yep. That's the thing that aggravates me. It's just like the learning Hindi. I'm like learning it, and then I'm like, oh, I learned this word, and then I'm like there. I said, "Kusakada kitar hai." Everyone starts laughing at me. It's just like, just say washroom. Just say washroom. It's just like, why would I learn the language if it doesn't even matter? If it doesn't even matter, that's the thing. It's just like I'm learning something, and it's just like, okay, washroom kitar hai. Okay. I can easily say that. Why am I learning this language when English is half of it? Yeah, but that's the thing. It's just like language does erode over time because people want to simplify it or they want to change it accordingly. That's just because. But that's just like one example. That's like the main example. Like I learned numbers, and I remember telling my mother about it. She's like, "Why? Why are you learning numbers? Like 1 through 10, that's all you really need." Like, okay. So learning 34 Joales is just pointless to me. But that stuck in my head because I was like so proud of being able to say something. And then I'm made fun of for it. I'm like, okay, I'll just say 44 then. I don't get it. But that's language.
That's language. You always need to. It always transitions over time. It always transitions. Take a look at this. अनन्ततः सर्वत्र लभ्यते मम शक्तिः केवलं तत् वास्तविकं करोति अभिसरणं विचलनं किं यदि कश्चित् एतत् स्पृशति स्म शापितग्निः विप्रिय रक्त Yup, Sanskrit anime. I totally see this getting a lot more popular in the future. Sanskrit mein people have been doing cover songs. ए हिरे प्रिया मधुर चंद्रिकायां नौमिलेव निरस्तस्थले प्रमोदते मना दोलायते मुदाम्बरम् आख्याति मन्मनश्चञ्चलायते नयहे मम हृदयेश्वर मातारांगण पारम. So अगली बार अगर कोई आपको बोले कि संस्कृत is a dead language, उनको ये बताना कि संस्कृत isn't dead, वो थोड़ी देर के लिए सो गई थी. And now our generation can make it wake up back. चलिए, that concludes this level just below the water. Now let's move on to the next level. Fact number 8. Iran. Fact number 8. Iran. दोस्त एक बात बताओ, जब कोई ईरान मेंशन करता है तो तुम्हारे जहन में क्या आता है? शायद एक एक्सट्रीमिस्ट कंट्री, पैराडाइज फॉर डिक्टेटरशिप, बेसिकली नॉट अ कूल प्लेस. देयरफॉर अगर मैं आपसे कहूं कि ईरान इंडिया का Hopefully that changes in the coming days. Hopefully that changes. I mean, who knows? America should have never gotten involved 40, 50 years ago in the first place, which is how they ended up with their supreme leader. It was America's fault to begin with. So we'll see. यानी कि भारत का मेले में बिछड़ा हुआ भाई है, तो शायद आपका हैरान होना लाजमी है. You see, ईरान हमेशा से ऐसा नहीं था. 630 AD के अरब कॉन्क्वेस्ट से पहले ईरान एक ज़ोरोएस्ट्रियन देश था. ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म के आज बस 1 से 2 लाख फॉलोअर्स ही हैं, मोस्टली जो इंडिया में रहता है. बट एक टाइम पे ना ये रिलीजन ईरान के 3 महान साम्राज्यों का ऑफिशियल लैंग्वेज था. एम्पायर्स लाइक द Achaemenid विद साइरस द ग्रेट एंड द पार्थियन एम्पायर एंड द Sasanian एम्पायर. लेकिन ये सब मैं आपको संस्कृत के वीडियो में क्यों बता रहा हूँ? Well, I'm not gonna lie, every time I'm watching like someone start to talk about history, I realize just how retarded I am. But at least I'm starting to learn a little bit, but it's funny. It's just like Indian history, I'm starting to learn more about. American history, I know like the bare minimum, but that's just 300 years old. So it's not that much history to learn. But when they start talking about everywhere else in the world, I'm just like, brain shut off. I know nothing. I mean, I know more about current affairs, current things, but like history of the world, I need to learn more about. Let's start with the most holiest chant of the Zoroastrians. मुझे बताना कि आपको क्या वाइब मिलता है. यथाहु वेरियो अथारतश अशाचित जायवंगेहश रस्दामनिंगो श्योसनिनाम अंगेहश मजदाय शत्रिम चा अहुराय ओयम द्रेगोब्यो ददद्वास्तारे. ये हैं उस चैंट के लिरिक्स. नोटिस कीजिए how some of these words seem exactly like Sanskrit. Yatha is also yatha in Sanskrit. Vairya is veer or brave. Mano is mind. Dadat means to give. This seems like a version of Vedic Sanskrit basically. So इस भाषा को कहते हैं आवेस्तान, जो कि मॉडर्न डे पर्शियन की एंसेस्टर थी. उसी तरह जैसे संस्कृत हिंदी की एंसेस्टर है. जिस तरह संस्कृत में लिखे गए थे वेद, द होली बुक्स ऑफ द हिंदूज, उसी तरह आवेस्तान में लिखा गया था गाथास, द होली बुक्स ऑफ द ज़ोरास्ट्रियंस. जिस तरह हमारा यज्ञ होता है, उसी तरह पर्शियंस हैव यस्ना, जहां वो भी अग्नि की पूजा करते हैं. एंड रिमेंबर कि ऋग्वेद का शुरुआत ही अग्नि जी के वर्शिप से होता है. तो आप सोच रहे होंगे कि इतना सिमिलर कैसे हो सकता है ये सब. दरअसल ये सिमिलैरिटीज कोई कोइंसिडेंस नहीं है. ओल्ड पर्शियन और वैदिक संस्कृत इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली के एक ब्रांच से ही बिलोंग करता है. स्लाविक बाल्टिक इज अ क्लोज ब्रांच टू दिस. दोनों इंडो इरानियन यानी संस्कृत और पर्शियन और स्लावो बाल्टिक लैंग्वेजेस लाइक रशियन और यूक्रेनियन में 100 को बोलने के लिए जो शब्द यूज होता है वो श या स से शुरू होता है, जबकि बाकी ग्रुप्स में क और ह से, लाइक किलो एंड 100. इसी रीजन से इन दोनों ब्रांचेस को शतम करके कहा जाता है, अंग्रेजों के लिए सैटम. और ये बस लिंग्विस्टिक्स तक सीमित नहीं था. वैदिक रिलीजन और आवेस्तान दोनों में फायर ही नहीं बल्कि हर उस फोर्स ऑफ नेचर को वर्शिप किया गया था जो लोगों को पावरफुल लगते थे, लाइक थंडर, विंड, रेन इत्यादि. जिस टाइम पे ऋग्वेद लिखा गया था ना 1500 BC में, उसी टाइम पे दुनिया के दूसरे छोर में एस्टैब्लिश हुई थी द मित्तानी किंगडम, जो कि प्रेजेंट डे टर्की सीरिया में बसा था. हम पाते हैं कि दे ऑल्सो हैड रेफरेंस फॉर वैदिक गॉड्स लाइक मित्रा, वरुणा एंड ऑल्सो इंद्रा. देयरफॉर यहाँ तक प्री ज़ोरास्ट्रियनिज्म और प्री हिंदुइज्म में एक कॉमन नेचर था. ईरान ने तो अपने यूनिक गॉड्स भी क्रिएट किए, लाइक गॉडेस अनहिता और तिष्ट्रिया. बट आफ्टर फ्यू सेंचुरीज ऑफ स्टेइंग अपार्ट, ईरान और इंडिया के कॉमन एंसेस्टर्स अपने अपने रास्ते चलने लगे. ज़ोरास्ट्रियनिज्म वेंट विद द अब्राहमिक अप्रोच एंड इट गॉट अ प्रॉफिट, अ सिंगल प्रॉफिट, ज़राथुस्ट्रा, या अंग्रेजी में ज़ोरास्टर. ही वाज द गाय नीचे वाज ऑब्सेस्ड विद, फीचरिंग हिम इन द टाइटल ऑफ हिज बुक द स्पेक ज़राथुस्ट्रा.
That's how you say the name. That's how you say the name. Nisha. Yeah. I haven't read that book. But yeah, I've always been interested in reading it, but I don't think I'd agree with most of it, but I would be interested in reading it. Zarathustra focused on simple things: good thoughts, good deeds, and good words. जबकि हिंदुइज्म में we kept our original pagan nature, allowing for a multitude of new gods and goddesses. हमारी दोनों कल्चर्स में एक कॉमन चीज भी थी. हम दोनों अपने आप को आर्य कहकर एक कॉमन आइडेंटिटी से रेफर करते थे. Zoroastrian texts में they refer to their homeland as Aryanam Vaiha, meaning the territory of the Aryas, which comprised of 16 different lands. सुनने में ये काफी आर्यवर्त से मिलता जुलता है, the land of the Vedic people. दोनों जगहों में स्वास्तिका was also a very important symbol, जो कि आज भी हिंदू sacred मानता है. Swastika is important in Persian culture. This motif, the history back date about 7,000 years ago. In fact, do you know that? Well, the thing is, it was important in all cultures, really. I mean, heck, even ancient churches had the shape, probably because it was easy to carve. But yeah, it was important in so many cultures. It wasn't until World War II where everyone started to have an aversion towards it, and because the language was changed entirely due to a mistranslation to English. That's literally how it happened. I'm learning Russian language, and believe me, Russian and Sanskrit are very similar. I mean, I wouldn't know. I mean, I can do a Russian accent. I mean, I'm not going to do that because, yeah, I'm not going to do that. Of course the present day term for the country Iran also comes from the root word Arya. वेदों में काफी जिक्र हुआ है about this drink called soma. This was a very important part of any sacrifice rituals. और इंद्र को सोमा बहुत प्रिय था. This drink is also mentioned in Avestan. The Iranians called this drink hauma. Soma help करती थी ऋषियों को to connect with the universe. Experts think that this soma drink refer to this plant called Ephedra sinica, जिससे मिलता है ephedrine, a kind of psychologically active plant. Also, fun fact, this plant in Mandarin is called Sauma Huang, which is still to this date used as a Chinese medicine. Zoroastrians और Hindus में एक major difference ये भी था कि Zoroastrians का supreme god थे Ahura Mazda. Notice how this sounds like Asura. Remember how the Iranians convert Sir to her, Sindhu to Hindu, Soma to Homa? Vedic tradition में Devas were the good guys, जबकि Zoroastrianism में Devas were the bad guys. Indra was name of one such Deva or a demon in Zoroastrianism. In fact, Avestan में legit एक मंत्र है घर की शुद्धि में जो use होता है, उसमें specifically एक line है to say Indra बाहर निकलो, go away. Research करते हुए I also found that Assyria में बकायदा एक city था called Ashur, जहाँ guess who was worshipped? Asura, the main god of that region. This was located south to the supposed Arya homeland. Could it be that this was the land that the Aryas referred to as the ancient Patal Lok? Asuras वैसे were not considered to be the bad guys all the time in the Vedas. This is accepted by a lot of experts. आपने अपने बुक में लिखा है रामायण रिवील में एक आपने टर्म है जो जिसको हम असुर बोलते हैं. तो इसके बारे में हमारे मन में असुर का मतलब यही रहता है कि ये राक्षस है, बुरा बीइंग है, बट यू हैव एक्सप्लेन्ड समथिंग एल्स इन द बुक. तो इफ यू कुड स्प्रेड सम लाइट ऑन दैट. श्योर. सो असुर, देखिए वेदों में अगर हम जाते हैं ना, सो वेदों में असुरत्व मींस स्ट्रेंथ. सो असुरत्व जो है वो एक टर्म है व्हिच इज इवन यूज्ड फॉर सम गॉड. जैसे कभी-कभी वरुण को भी या मित्र को भी असुर बताया गया है क्योंकि वो बहुत पावरफुल है, तो वो बहुत स्ट्रांग है. तो ये हमें समझ में आता है कि इट वाज नॉट अ प्योरली नेगेटिव टर्म शुरू में. ऐसा लगता है that due to some political clashes, Vedic Arya और Persian Arya में कुछ झगड़ा जैसा हो गया, and they accepted different gods. The Vedic Arya stuck to their Indra-based worship, while the Persian Arya seem to have adopted their Assyrian god Ahura or Ashura. But पता है क्या ये आर्यों के बीच झगड़ा? I mean, or it could be a part of history where literally the origin of their differences started with people from that. One side backed one person, the other side backed another person, and they saw the other one as a demon or as the villain. I mean, to me, that makes the most sense when it comes to like history. You have to read between the lines and see exactly, okay, who were these defined figures? What could they have been? I mean, sure, is it divine? I mean, sure. Absolutely. But at the same time, for me, I'm more of a skeptic in all things. I'm always questioning the fact that they literally swapped the heroes and villains means that each one of them had someone there that was the hero, that was the villain to each other. That's just how it works.
होना कोई नई बात नहीं है, ये सदियों से होती आ रही है. As we just saw between Sanskrit and Persian speakers, then we later see between Kauravas and Pandavas, between Punjabis and Haryanvis, and Vedic काल के दौरान between Arya tribes also. जैसा कि हम देखते हैं ऋग्वेद में दशराज्य युद्ध और the Battle of the 10 Kings, जहां भारत ट्राइब के सुदास के गुरु विश्वामित्र was angry when he was replaced by another priest Vashishta. So he helped 10 kings from different tribes to wage a war against Sudas. Sudas won, but instead of humiliating his opponents or killing them outright, उन्होंने कुछ बहुत strange किया. उन्होंने उनसे दोस्ती कर ली and उन्होंने बोला कि the Aryas will start worshipping the gods of the defeated tribes. And maybe that is how Aryas started worshipping idols, something that was a common practice in the non-Aryas. And शायद इसी tolerance की वजह से आज Hinduism हर किसी From Indian in Pixels, it's learn more of the basics. Yeah, I mean, I prefer the basics if I'm honest. I could never spend years of my life down these rabbit holes. As amazing as it is for people who actually learn this kind of stuff, who just take time to learn the histories and the nuances of everything, it's too much time for me. It's too much time for me. I respect to those who actually do learn it, but to me, the just knowing the history is fulfilling enough. Eventually, maybe I'll learn something extra that adds on to my information, but to go in depth, I mean, people can lose themselves. I mean, people will spend their entire life just going through the Vedas. People will spend their entire life going through the Quran. People will spend their entire life going through the Bible. People dedicate their lives to certain things, just trying to learn the mysteries within, type of thing. And it's just like, respect to them, but I can't do that. I can't do that. It doesn't take years. It does. Especially when you start learning some information, you need to learn the counter information as well, like what goes against it. के बिलीफ सिस्टम को एक्सेप्ट कर लेती है. तो अगली बार जब आप ईरान के बारे में सोचें, तो याद रखना कि दिस इज नॉट जस्ट अ मुस्लिम देश. ये एक एंशिएंट सिविलाइजेशन भी थी, जिसका भारत के साथ एक गहरा रिश्ता है, जहां वैदिक ऋषियों ने यज्ञ आर्किटेक्चर से बनाया सुलभ सूत्रस, द होल फील्ड ऑफ ज्योमेट्री, एंड आल्सो रेवोल्यूशनाइज्ड मैथ्स विद द कांसेप्ट ऑफ जीरो और शून्य. हमारे आर्य बांधव पर्शियंस ने अलजेब्रा और फिलोसफी में पारंगत हासिल की. Also, the Arya tradition of astrology and interest in astronomy is common to both Hindus and Iranians. So yeah, maybe we didn't separate on very good terms, but considering that so many Zoroastrians आज भारत के शान हैं, I guess we kind of still embraced each other. And just like that, we come to the end of our level deep waters. And समय and audience retention को ध्यान में रखते हुए end of our video also. Something tells me. I'm not gonna lie, I enjoy that. That's normally what happens to me. Normally, well, at the very beginning, it just like after people see me open my mouth, it just drops. It's like, well, I lost them. I don't know what it is. People have like a immediate attention span. You need a hook that grabs them and that can sustain them. I guess I just don't have that kind of presence. I don't have that kind of presence. Maybe I need to move more or do weird faces or something. Who knows? कि हम समुद्र तल तक पहुंचे नहीं हैं. ऐसा लगता है कि अभी बहुत सारे फैक्ट्स और भी बाकी हैं. आइसबर्ग और भी डीप Okay, I guess it's done. No subtitles, nothing. So the deepest point of the iceberg is, well, you're still here. That's basically it. Oh my gosh. I did enjoy that. Like learning a bit, like especially the history behind it and the fact that someone saw the language being eroded. So what did he do? He created a guide to keeping it the way it is. And that's perfectly commendable, because that's how it has to be. There has to be something there to protect the language, because English is lost forever. That, I mean, you can go to old text, but people always re-release the old classics in newer in a newer version with newer terms, newer understanding of the language. Because someone goes to like in old text to something, it just sounds like it doesn't even sound like English, so they have to re-release it so people can actually understand it. Yeah. Oh well. You guys get a video? So bad. And don't forget to like and subscribe. Wait like that.